धारवार पैटर्न सो अप्रोक्सीमेटली तार एज होची केते 3300 मिलेनियम टू 2550 मिलेनियम अप्रोक्सीमेटली तार एज तो धारवार पैटर्न जो डिपोजिशन तमे पाइबो ना होल प्री कैम्ब्रियन कोन पाइबो एमती पर्टिकुलर आर्कियन के प्रोटोजोइक नहीं तार स्टार्ट होची धर 3300 अप टू 2550 पर्यंत डिपोजिशन है तो एरिया किसी मन रखे आवश्यकता नहीं तो जब जानता बैच कोन एरिया 4.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर so each depositional area they consist of successions but deposition in a chronological sequence ताको मन रखना को पड़ता है ना so this is your Dharwar pattern ये जो पार्ट आज completely Dharwar pattern so Dharwar pattern भीतर देखो कटापा सब ग्रुप जाए है ना तो आरा मोर बाउंड्री तुम्हें मन रखे होगी तो नॉर्दर्न पार्ट जाओ तो तुम डेकन ट्रैप पाइबो और पुराना बेसिस पाइबो विमा बेसिस कलेक्ट बिजनेस ईस्टर्न पार्ट में सीधा डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल पाइबो नॉले किछ पार्ट तुम इट इज कनेक्टेड टू ईस्टर्न घाट वेस्टर्न पार्ट में सीधा अरबियन सी पाइबो साउदर्न पार्ट इट इज की बाउंडेड बॉर्डर बाय पांड्यन मोबाइल बेल्ट और द पांड्यन मोबाइल बेल्ट मैं नॉर्दर्न पार्ट तार बाउंड्री तो विजुअलाइज करिक डायग्राम करिक मन रखियो सो दैट की तार डिफरेंट बाउंड्री कोन कोन अछि सो दैट की तुमे जो डेकन ट्रैप पड़िबो तुम जानि परबे तार बाउंड्री के सुदरवा कटन सुदरवा कटन को दीटा ब्लॉक का डिवीजन कराई ओटे डब्ल्यूडीसी को आजे ईटीसी वेस्टर्न धारवार कटन ईस्टर्न धारवार कटन सियर जोन कहते चित्रदुर्ग सियर जोन चित्रदुर्ग सियर जोन so that divides the western Ghat Deccan Trap into two parts WDC it is western Dharwar Pattern and eastern Dharwar Pattern data को division करते चित्रदुर्ग सियर जोन so both have different successions वो मन रखिया पड़ेगा so this is generalized succession western तो eastern compare करके मन रख पारिबो है ना so western Dharwar बेसमेंट अछि किस बेसमेंट एपर तो जणा पड़िबो western Dharwar so this is the succession of western Dharwar pattern तो each succession में कौन था गोटे बेसमेंट है और बेस रे किसी डिपोजिशन है तापर तारा ऊपर का ओवरलैंग किसी डिपोजिशन है Dharwar supergroup पहले और it consists of this much deposition it goes to Dharwar supergroup that is the overlying deposition and then below is the basement so basement which are Sarpur group आउडी तळ गले तार बोरर केस हला सभा तळ आइट में बोरर केस पाइबो कि 3300 टू 3400 मिलियन আছে টাকা বাকি তোমার প্রাইস সে ভ্যালু আর্কেন টাইম হ্যাঁ সো 3400 टू 3300 बोरर केस আছে তারপরে তোমার আছে সরপুর গ্রুপ যেটা কি 3100 टू 3300 तो एज ही मन रखना चाहिए कारण क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में गाड़ी तो क्वार्जाइट पेलेट्स मार्बल कैल्सिलिकेट रॉक्स तो तुम्हारा ये जो लिथोलॉजिकल कंसीडरेशन আছে এগুলা তুমি সর্বদা মনে রাখতে পারিবার आवश्यकता নাই খালি ফরমেশন পুরা মনে রাখো আর जो जो इंपोर्टेंट আছে সেটা মনে রাখিও হয় तो पेनिनसुलर मिसिक कॉम्प्लेक्स तापर আসলা को সারগুলো উপর আসছে যখন पेनिनसुलर मिसिक कॉम्प्लेक्स
डिपोजिशन तार टीटीजी कहते ट्रोनजेमाइट granodiorite. It is an intrusive structure. It is, you can consider it as a bathylic type of intrusive thing. There is 3000 millimeter or the place of Dharwar supergroup. So Dharwar supergroup, it is divided into two groups. The Bhavabudhan group and a Chitra group. Bhavabudhan group चारटा formation division ହେଇଛି Palaspora, Alampura, Santamari, Mulan. ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବା କି କଲସ୍ପରରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ କମ୍ପ୍ରୋମେଣ୍ଟ ମିଳେ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଠି ମନେ ହେଲା ବୁଲନରେ ବିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଆଇରନ୍ ଫର୍ମେସନ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ ଡିପୋଜିସନ ତାପରେ ଅନକନଫର୍ମିଟି ଅଛି ବା ଡିସକନଫର୍ମିଟି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଅଛି ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗ ଗ୍ରୁପ ଦୁଇଟା ଡିଭିଜନ ହେଇଛି ସବ୍ ଗ୍ରୁପରେ ବାନିବିଲାସ ଆଉ ରାନିବେଲି इतने इकोनॉमिक डिपोजिशन बीए मिले ऊपर में यंगर कनेक्ट चैनोपेट्स और प्रोटोजोइक मैट्रिक टाइप्स ये तुम्हारा धरवार पैटर्न और बाकी वेस्टर्न धरवार पैटर्न सक्सेसर देन कम्स टू वेस्टर्न धरवार पैटर्न सर ईस्टर्न धरवार पैटर्न तो ईस्टर्न धरवार का बेसमेंट एक्सपोज ହେଇନି बेसमेंट कौन सा मिलेनी तो ताको दुईटा डिवीजन कराई छै यशवंतनगर फॉर्मेशन कोलार ग्रुप जोटा कि इक्विवेलेंट टू बाबाबुदान ग्रुप और चित्रदुर्ग ग्रुप यशवंतनगर कोन से कंपनी से डिपोजिशन बा तार कुछ डिवीजन नहीं कोलार ग्रुप रो तीनटा डिवीजन आछो ओरा शंकर साहाली फॉर्मेशन गोल्डफील्ड वोल्केनिक्स और चैंपियन ग्रीस तापर तुम्हारा दरबार बाथलित रहउची चनकाइट्स रहउची प्रोटोजोइक मैट्रिक टाइप्स तो दीटा सक्सेसन तुमको भलो से मन रखे अपना दरबार तो there are different granites that found within your cratons तो दरबार पैटर्न में डिफरेंट ग्रेनाइट में तो डिफरेंट नेमिंग कराई वो जगह नहीं हैला तो मन रखे पड़े बसो तो यंगर ग्रेनाइट्स पाइला गोटे हैला तापरे आउ पाइबो तुम क्लोजपेट ग्रेनाइट गोटे अदर को होची कि जमपालन की कानकोटे or Jane Kotek granite the body. So there occur within तो खाली मन रखो there occur within Dharwar pattern. बड़े क्वेश्चन पड़े कि this granite को पैटर्न है ना आरसी करें व बनबरा ग्रेनाइट उस्तुरा ग्रेनाइट चामुंडी ग्रेनाइट चामुंडी उसको में पाइबो होची चामुंडी हिल सब मैसूर जीव ताल मैसूर रे पाइबो है ना तापर अल्काली ग्रेनाइट्स सेगुरा सब जगह occur within the Dharwar pattern. Another important thing, economic deposits within each succession. यह तुमको हेल्प करे फरे इकोनॉमिक जियोलॉजी रे लेबेट तुमको मन रखा पड़ो कौन डिपोजिशन इंपोर्टेंट डिपोजिशन मिले एसोसिएटेड थाए गोटे पर्टिकुलर सक्सेशन से तो ये तुम्हारे इकोनॉमिक डिपोजिशन डिफरेंट टाइप रे मिले और मैंगनीज मिले तुमको मन रखा पड़ो को जगह शिमोगा चित्रदुर्ग सांदूर उत्तर कन्नड़ बेल्ट तो कपर मिले जोगी मात्री चित्रदुर्ग ब्रासियो कोलेली एरिया लुगियाली बेल्ट नहीं এটা बहुत इंपोर्टेंट डिपोजिशन गोटे इंग्लादाल एरिया होची कि चित्रदुर्ग बेल्ट रा कि कपर मिले इट्स वेरी इंपोर्टेंट इंग्लादाल तापर गोल्ड मिले एठी दीटा रे गोटे कोलार गोल्ड फील्ड कुटी गोल्ड फील्ड केजीएफ जानतो पहला से कोलार सिक्स बेल्ट होची कुटी कर्नाटक कोलार और कुटी कुटी कर्नाटक रीजन আছে शिमोगा इस कर्नाटक रीजन धारवाड़ जब को कर्नाटक रीजन तार सहित अंजनाली गोल्ड फील्ड अछि जोटा चित्रदुर्ग रे अछि गदा गोल्ड फील्ड आ इंपोर्टेंट गोल्ड फील्ड अछि
एटी क्रोमाइट क्रोमाइट मिले जोटी कि कपर नुगिहाल बेल्ट मिलतो सेठी भी क्रोमाइट मिले नुगिहाल बेल्ट रे तारे बायरापर डिपोजिट अछि आरसीके रे हासान डिस्ट्रिक्ट मिले सिंधु वैली रे मिले तो सब जगह ना तुम खाली मन रखना चला मैग्नेसाइट इंपोर्टेंट मन रखो दोड़का तो ହେଲା ଫୁଲାହାଲି ଏସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳେ तो टोटाली तुमको जितने गोटे सक्सेसन पढ़ुछ सक्सेसन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जदि किसी इंपोर्टेंट इकोनॉमिक डिपोजिशन अछि बा से सक्सेसन भितरे कोनसी इकोनॉमिक सॉरी वोल्केनिक एक्टिविटी बा मोर ग्रेनिटिक डिपोजिशन जो अभी अछि सोना बना धरवार पैटर्न में तुम्हारा ग्रेनिटिक एसिड पेनिनसुलर ग्रीसी कॉम्प्लेक्स तक कहते पेनिनसुलर ग्रीसी कॉम्प्लेक्स तार कंपोजिशन होछि हमें बीपीजी बोली कहते टोनालाइट ट्रांसजेमाइट ग्रानोडाइट तो इट इज ए इंट्रूसिव स्ट्रक्चर